Welcome to today's lecture. So, in our last lecture, we have started with unit number 3, that is kinematics of fluid flow. Okay, then we will see some properties of fluid particle. Okay, kinematic property of fluid particle. So first kinematic property which we are going to see, that is called as velocity of fluid particle. Okay, so velocity is simply defined as the rate of change of displacement with respect to time. Okay, that means if the fluid particles travels a distance dx, sorry, if the fluid particle travels a distance dx in x direction in time dt, okay, so its component of velocity in x direction, okay, it will be dx by dt. Okay, so u equals to dx by dt. Similarly, if it travels a component distance of dy in time dt in y direction, so the component of velocity in y direction, it will be dy by dt. Okay, similarly, if the fluid particle travels the distance dz in time dt, therefore the component of velocity in z direction, that is w, so w equals to dz by dt. Okay, and remember, velocity, it is a vector quantity. Okay, so it is a function of space and time. So if time changes, then velocity will change. If the length changes, so velocity will change. Okay, that means आप 100 मीटर ट्रैवल कर रहे हो in 1 minute. Okay, और ये डिस्टेंस सपोज अभी सेम 1 मिनट में आप 200 मीटर ट्रैवल कर रहे हो. ओके, तो आपका वेलोसिटी जो रहेगा सेकंड केस में, इट विल बी 200 डिवाइडेड बाय 1 मीटर 1 मिनट. Okay, so velocity will change. या फिर there are two bodies. First body is traveling 100 meter in 1 minute. Second body is traveling 100 meter in 2 minutes. तो यहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है. Okay, so टाइम भी चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज होता है, स्पेस भी चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज होता है. Therefore it is a function of space and time. Velocity is a function of space and time, and it is a vector quantity. Okay, if u, v and w, these are the component of velocity in x, y, z direction, therefore u is also a function of space. अभी स्पेस में एक्चुअली हम 3 डायमेंशन बोलते हैं, x, y and z. So f1, u will be a function of x1, x, y, z and t. V will be the function of space, that is x, y, z and t, and w will be the function of space, that means x, y, z and time t. Okay, then the resultant velocity v or vector v. So vector v is nothing but u into I cap plus v into j cap plus w into k cap, and magnitude of vector v is nothing but under root of u square plus v square plus w square. Okay, so in this way you can find out the velocity of fluid particle. Okay, after that we will see the next and most important property, kinetic property of fluid flow, that is acceleration of fluid flow. So acceleration is simply defined as the rate of change of velocity with respect to time. Okay, so if ax, ay and az, these are the total acceleration or acceleration along x, y and z direction respectively, then by rule of differentiation we have ax. Okay, so ax is nothing but du by dt. Okay, now remember u, अभी ऊपर हमने define किया था, u is a function of space and time, so x, y, z and time t. Okay, u is a function of x, y, z and time t. Therefore complete differentiation of u, that is du. Okay, so complete differentiation क्या होता है? It is the sum of partial differentiation. Okay, तो अब ये function क्या है? x का भी है, y का भी है, z का भी है, t का भी है. That means it is a function of 4 different variables. Okay, so total differentiation of u, it will be partial differentiation of u in x direction. Okay, del u by del x, okay, into dx. Del u by del x into dx. ये क्या हुआ? Partial differentiation of u in x direction plus partial differentiation of u in y direction. So it will be del u by del y into dy. Okay, partial differentiation of u in y direction plus partial differentiation of u in z direction. So that is del u by del z into dz plus partial differentiation of u in t direction. So that is del u by del t into dt.
Okay, del u by del t into dt. Now we will divide the entire equation by dt. तो हमने लेफ्ट साइड में dt डिवाइड किया. ओके, तो राइट साइड में हमें हर कंपोनेंट को dt डिवाइड करना पड़ेगा. डिवाइड बाय dt, here dy by dt, divide by dt, here dz by dt, that means divide here by dt, and here dt upon dt. Okay, so dt and dt cancel हो जाएगा, dt dt cancel. So finally we have this du by dt left side. Okay, du by dt. So this is acceleration in x direction, that is rate of change of velocity along x direction in per unit time. So du by dt, so that equals to del u by del x into dx by dt. Okay, del u by del x into dx by dt plus del u by del y into dy by dt. यहाँ पे हमने डिराइव किया del u by del y into dy by dt plus del u by del z into dz by dt, del u by del z into dz by dt plus del u by del t. Okay, so is this understood? This will be the total acceleration ax. Okay, now here this dx by dt is nothing but component of velocity in x direction, that is u. This dy by dt is nothing but rate of change of distance in y direction in time, so it is v. Okay, this dz by dt is nothing but rate of change of dimension in z direction in unit time dt. So this is w. So we'll put the values. So we will have acceleration ax is nothing but du by dt, that equals to u. यहाँ पे हमने u put किया, so it is u del u by del x plus v del u by del y plus w del u by del z plus del u by del t. Okay. Similarly, you can find out the total acceleration along y and z direction. Okay. So along y direction, it will be dv by dt. So dv by dt is nothing but u del v by del x plus v del v by del y plus w del v by del z plus del v by del t. Similarly, az. So az is nothing but dw by dt. So it is u del w by del x plus v del w by del y plus w del w by del z plus del w by del t. Okay. So in this way, we can find out the total acceleration along x, y, and z direction respectively. अभी इसको याद कैसे रखना है? Okay. Remember, I am going to give you one short trick. आप उससे फॉर्मूले याद रख सकते हो. Okay. So component of acceleration. Okay. यहाँ पे जो भी डायरेक्शन आएगा. So इसका जनरल कितना है? सी u del by del x, ये कॉमन है. Okay. u del by del x, u del by del x, u del by del x. Okay. Then यहाँ पे v del by del y, v del by del y ये कॉमन है. So v into del by del y. Okay. ये भी कॉमन है. Then यहाँ पे w del by del z, w del by z कॉमन है. So w into del upon del z. Okay. Plus यहाँ पे del by del t कॉमन है. Okay. So plus del by del t. तो ये इतना हर फॉर्मूला में कॉमन है. अभी यहाँ पे ax पूछा है. ओके. तो डिफरेंशिएशन के अंदर हमें कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, मतलब हर जगह पे u लेना है. ओके. यहाँ पे सपोज y पूछा है, ay. ओके. तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन के अंदर हर जगह पे स्मॉल v लेना है. और यहाँ पे az पूछा है. ओके. तो इस फॉर्मेट में यहाँ पे डिफरेंशिएशन के अंदर w यूज करना है. ओके. सो इस तरह से आप याद रख सकते हो. ओके. सो ax is u del u by del x plus v del u by del y plus w del u by del z plus del u by del t. Similarly, ay and az. Okay. Direct numerical. Okay. See, in this equation, theory part डाला नहीं है. Okay. So in this equation, you can say यहाँ पे दो टाइप के acceleration है. There are two types of acceleration. First is the acceleration which is changing with respect to direction x, y, and z. Okay. That means u del by del x. Okay. Del u by del x. Okay. यहाँ पे u del v by del y, u del v by del x. Okay. ये जितने भी नौ कंपोनेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, all these 9 components represent the rate of change of velocity with respect to direction. Okay. So इनको हम बोलते हैं convective acceleration. Okay. So this is convective acceleration. Convective acceleration. Okay. So convective acceleration is the acceleration in which
there is a change in velocity with respect to direction. Okay, और ये जो component है del u by del t, del v by del t and del w by del t, this component, okay, these three component, it represent the rate of change of velocity with respect to time. So it is called as local acceleration. Okay, local acceleration. Okay, therefore we can say this total acceleration. Okay, total acceleration, total acceleration. Okay, it is a sum of local acceleration, convective acceleration, convective, okay, I'm writing in short, convective acceleration plus local acceleration. Okay, convective acceleration plus local acceleration. Total acceleration, it is a sum of convective acceleration plus local acceleration. अभी हम स्पेशल केस देखेंगे फॉर स्टडी फ्लो, for steady flow, for steady flow. Okay, for steady, 1 minute I am writing, for steady flow. Now steady flow क्या होता है? Steady flow is a type of flow in which the property is not changing with respect to time. Okay, therefore del u by del t, यहाँ पे with respect to time है, it should be equals to 0. Similarly del v by del t should be equals to 0. Del w by del t should be equals to 0. Therefore local acceleration is 0. For steady flow, local acceleration, it is 0. Okay, so for steady flow local acceleration is 0, therefore total acceleration equals to convective acceleration. Okay, then for uniform flow, for uniform flow, for uniform flow, okay, 1 minute I am writing, for uniform flow. Now uniform flow में क्या होता है कि there is no rate of there is no change in velocity with respect to direction. Okay, that means del u by del x 0 होना चाहिए. Okay, x direction में u का change, velocity का change 0 होना चाहिए. Similarly u direction में, y direction में u का 0 होना चाहिए, z direction में u का 0 होना चाहिए, x direction में v का 0 होना चाहिए. That means all these 9 differentiation, del u by del x, del u by del y, del u by del z, del v by del x, del v by del y, del v by del z, del w by del x, del w by del y, del w by del z, this should be equals to 0. Okay, therefore for uniform flow convective acceleration is 0. Okay, convective acceleration, okay, it is 0. Okay, therefore for uniform flow total acceleration equals to local acceleration. Okay, and for steady uniform flow, okay, अभी कौन सा केस बोल रहे हैं आप? स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो. सो फॉर स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो, स्टडी भी और यूनिफॉर्म भी है, तो बेसिकली लोकल एक्सेलरेशन इज आल्सो 0, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन इज आल्सो 0. देयरफॉर total acceleration, which is the sum of local and convective acceleration, that equals to 0 plus 0, that means 0. Therefore total acceleration is 0. Okay, रिमेंबर आपको ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है और ऑनलाइन एग्जाम में इस एक्सेलरेशन के ऊपर इस तरह से एमसीक्यूज आ सकते हैं. ओके, आपको दिया रहेगा फॉर स्टडी फ्लो. ओके, फॉर स्टडी फ्लो चूज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, 4 ऑप्शन दिए होंगे. टोटल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू लोकल एक्सेलरेशन प्लस कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू लोकल एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन एंड टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0. ऐसे 4 ऑप्शन दिए होंगे. ओके, तो हमारा कौन सा है? स्टडी फ्लो है. तो बेसिकली लोकल एक्सेलरेशन इज 0, देयरफॉर टोटल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन. ओके, तो लाइकवाइज यूनिफॉर्म के लिए एमसीक्यू आ सकता है या फिर स्टडी यूनिफॉर्म के लिए आ सकता है. ओके, सो रिमेंबर ऑल दिस फॉर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. Then numericals, so we will see the numerical. Okay, I had already told that ये यूनिट बहुत सिंपल यूनिट है. ओके, सिर्फ आपको सिंपल मैथ्स आना चाहिए और आपको सिंपल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना चाहिए. ओके, आपको सिंपल मतलब आपको फॉर्मूले में नहीं जाना है डिफिकल्ट, सिर्फ आपको इतना आना चाहिए कि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3x स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x. ओके, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1. ओके, और सिंपल एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाय 2. ओके, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स क्यूब बाय 3. एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4. सिंपल आपको इतना मैथ्स आना चाहिए, सो यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ काइनेमेटिक्स. ओके, सो विल सी द फर्स्ट प्रॉब्लम. अभी फर्स्ट प्रॉब्लम में हमको वेलोसिटी वेक्टर दिया है. तो वेलोसिटी वेक्टर इन द फ्लूइड फ्लो इज गिवन बाय
vector v equals to 4x cube I cap minus 10x square y j cap plus 2t k cap. Okay, find the velocity and acceleration of the fluid particle at any point p 2 comma 1 comma 3 at time t equals to 1 second. Okay, so हमें x y and z मतलब coordinates दिए है और हमें time की value भी दिया है, time t equals to 1 second. Okay, so first of all we will equate this equation with a standard equation, that is vector v equals to u I cap plus v j cap plus w k cap. Okay, so equating that, we will have u equals to 4x cube, v equals to minus 10x square y, and w equals to 2t. Okay, so we will have u equals to 4x cube, v equals to minus 10x square y, and w equals to 2t. Then हमें point कौन सा दिया है? Point is 2 1 3. Okay, that means here x coordinate is 2, y coordinate का value 1 है, and z coordinate का value 3 है, and time is 1 second. Okay, so hence putting all this value of u v w x y z and t in u v and w, so हमारा u क्या था? u equals to 4x cube, so it is 4 into 2 cube, so it is 32 units. Okay, अभी हमें यहाँ पे यूनिट पता नहीं है whether it is मीटर पर सेकेंड, mm per second, सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो आप यहाँ पे सिंपल यूनिट लिख दो. Okay, similarly v is nothing but minus 10x square y, so it is minus 10, x का value 2 है, so 2 square into y का value 1 है, so minus 2 square into 1, minus 10 into 2 square into 1, so it is 2 square is 4, so 10 4s are 40, so minus 40 units. Similarly w is 2 into t, and t is 1 second, so 2 into 1, that is 2 units. Okay, so putting the value of u v and w. Okay, so we will have resultant velocity. Okay, sorry, vector v is nothing but u का value put कर दो, so 32 I cap, v का value put कर दो, so minus 40 j cap, w का value put कर दो, so plus 2 k cap. Then magnitude of resultant velocity. Okay, so that equals to under root of u square plus v square plus w square, so under root of 32 square plus minus 40 square plus 2 square. So put all the values and take the square root, so it is 51.26 units. Okay, after that next is acceleration. हमें साथ में acceleration भी बोला ना, find the velocity and acceleration. So acceleration करने के लिए हमें पता है total acceleration is nothing but u del u by del x plus v del u by del y plus w del u by del z plus del u by del t. Similarly ay is u del v by del x plus v del u by del y plus w del v by del z plus del v by del t. Similarly, acceleration in z direction, az is u del w by del x plus v del w by del y plus w del w by del z plus del w by del t. Okay, अभी जितने भी 1 2 3 4 5 6 7 8 19 11 12, ये 12 क्वांटिटीज आपको इंडिविजुअली कैलकुलेट करने हैं. सो पहले हम del u by del x निकालेंगे. ओके, सो del u by del x के लिए आपको क्या करना है? u क्या है हमारा? 4x क्यूब. ओके, सो आप उसका डिफरेंशिएशन करो विद x डायरेक्शन. ओके, 1 मिनट. u कितना है हमारा? u इक्वल्स टू 4x क्यूब, 4x क्यूब. सो हम del u by del t निकालेंगे. वी विल डिफरेंशिएट, सॉरी, del u by del x. सो हम x से उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सो 4 एज इट इज रहेगा, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3x स्क्वायर. ओके, सो 4 3 कितना होता है? 4 3 12, सो del u by del x इज 12x स्क्वायर. सिमिलरली हम u को y से डिफरेंशिएट करेंगे, तो y से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे u में y का कंपोनेंट ही नहीं है. ओके, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट हो जाएगा, सो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, सो del u by del y इज 0. सिमिलरली del u by del z, यहाँ पे z का कोई कंपोनेंट नहीं है, सो इट इज 0. सिमिलरली ये इक्वेशन में t का भी कोई कंपोनेंट नहीं है, सो del u by del t is also 0. Okay, similarly we will calculate del v by del x. So I think v कितना है? minus 10x square y. v is minus 10x square, minus 10x square, sorry, minus 10, यहाँ पे स्क्वायर है. ओके, minus 10x square y. ओके, सो del v by del x, del v by del x. जब आप x से डिफरेंशिएट कर रहे हो, ये -10 और y कांस्टेंट है, सो -10y साइड में चले गए. ओके, सो इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, दैट इज 2x. ओके, सो -10y into 2x, so it is -20xy. ओके, सिमिलरली जब आप y से डिफरेंशिएट करोगे del v by del y, तो यहाँ पे -10x स्क्वायर कांस्टेंट
है और y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y it will be 1, simply minus 10x square. Okay, then del v by del z. So del यहाँ पे z है ही नहीं, so basically इसका डिफरेंशिएशन 0 रहेगा and t भी नहीं है, so इसका डिफरेंशिएशन 0 रहेगा. Okay, then w कितना था हमारा 2t. Okay, so हम w del w by del x करेंगे तो बेसिकली आप 2t को x से डिफरेंशिएट कर रहे हो तो 0 हो जाएगा. सिमिलरली y कंपोनेंट भी नहीं है, सो del w by del y is 0. z का कंपोनेंट भी नहीं है, सो del w by del z is 0. और w कितना था 2 into t, सो 2 कांस्टेंट चले गया. अब t से डिफरेंशिएट कर रहे हो तो t का डिफरेंशिएशन 1 होगा, सो इट इज 2 into 1, that is 2. Okay, so once you know all the values, okay, once you know all the values और ये जितने भी 12 डिफरेंशिएशन है इनका वैल्यू आपको पता चल गया. Okay, so you can put these values, you can put these values here. Okay, so u कितना था हमारा 4x cube, u is 4x cube multiply by del u by del x. Del u by del x कितना है 12x square. Okay, so it will be 4x cube multiply by 12x square. Then plus v कितना था हमारा minus 10x square y into del u by del y. Del u by del y कितना है 0, so it is multiplied by 0. Then w कितना है हमारा 2t multiply by del u by del z is 0, so 2t into 0 plus del u by del t is also 0, so plus 0. Okay, तो ये सारे वैल्यू 0 हो जाएंगे. यहाँ पे क्या होगा 12 4 जा 48, so 48 and x cube multiply by x square is x to the power 5, so 48 x to the power 5. Okay, अभी हमें ये कहाँ पे निकालना है at point 213. यहाँ पे y और z का तो कंपोनेंट ही नहीं है, सिर्फ x है, तो x का वैल्यू 2 पुट कर दो. It is 48 into 2 to the power 5. So 48 into 32, it is 1.36 unit. Okay. Similarly, you can calculate AY. Okay. So for calculating AY, again put the value of u del v by del x. So it is 4x cube into del v by del x का value minus 20xy. Okay. Plus v del v by del y. V का value कितना है minus 10x square y and del v by del y कितना है minus 10x square. Okay. Then del w by del z. So del w का value 2t है and del v by del z 0 है. Then plus del v by del t. Del v by del t भी 0 है. Okay. So solve this. So it will be 4 into minus 20. So minus 80. X cube into x is x to the power 4 plus into y. Then plus यहाँ पे 10 minus 10 into minus 10 plus 100. X square into x square x to the power 4 into y. So it is minus 80 x to the power 4 into y plus 100 x to the power 4 into y. Okay, यहाँ पे x और y का वैल्यू पुट कर दो. So यहाँ पे 2 to the power 4 into 1, यहाँ पे 2 to the power 4 into 1. So this, so it is minus 1280 plus 1600, so plus 320 units. Okay, similarly az निकालना है. Az के लिए फिर से u का वैल्यू पुट करो 4x cube, del v by del w by del x is 0, and again v का वैल्यू पुट करो minus 10x square y into del w by del y is 0, then plus w into del w by del z. Okay, so w का वैल्यू है 2t and del w by del z is 0, plus del w by del t. So del w by del t is 2 into 1, so simply 2 units. Okay, so आपने a, y और z component of acceleration in a, y and z direction निकाल लिया. That is 1536 units, 320 units and 2 units. उसके बाद में acceleration vector. So acceleration vector is nothing but axi cap plus ayj cap plus az k cap. So put the values. So it is 1536 I cap plus 320 j cap plus 2 k cap. Then magnitude of total acceleration. Okay, so that equals to under root of ax square plus ay square plus az square. So it is under root of 1536 square plus 320 square plus 2 square. So उसका square root लो addition करने के बाद. So it is 1568.9 units. Okay, so in this way you can solve any numerical on velocity and acceleration. Okay, after that we will see one more numerical on acceleration, velocity and acceleration. The following cases represents the two velocity component. Okay, आपको दो velocity component दिया है u and v. Okay, और second case में v और w दिया है. Determine the third component of velocity. Okay, अभी यहाँ पे u और v दिया है, आपको w पूछा है. यहाँ पे v और w दिया है, आपको u पूछा है. So determine the third component such that they satisfy the continuity equation. Okay, actually this is not a problem of acceleration velocity, it is a problem of continuity equation. Okay, so अभी हम ये
थ्री डायमेंशनल कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो हमने देखा था, दैट इज del u by del x, del u by del x plus del v by del y, del v by del y plus del w by del z, del w by del z, this equals to 0. ओके, ये हमने अभी ऊपर डिराइव किया है ना कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इन थ्री डायमेंशनल। तो यहाँ पे हमें दो कंपोनेंट दिए है, u और v दिया है और w कैलकुलेट करना है। ओके, और सेकंड केस में v और w दिया है, u कैलकुलेट करना है। ओके, सो बेसिकली वी आर सपोज्ड टू solve the problem. So the continuity equation for incompressible fluid flow is given by del u by del x plus del v by del y plus del w by del z that equals to 0. Okay, अभी हम पहले ये तीनों टर्म निकालेंगे। ओके, केस वन के लिए u दिया है, सो u is x square plus y square plus z square, so del u by del x, so del u by del x will be ddx of x square plus ddx of y square plus ddx of z square. So ddx of x square कितना होगा 2x, ddx of y square में एक्चुअली x का कंपोनेंट नहीं है तो 0 and z square में भी 0, so it will be del u by del x is simply 2x. Okay, similarly v क्या दिया हमें, v दिया एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो इसका हमको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करना है। ओके, del v by del y, तो आप फर्स्ट टर्म का विद रिस्पेक्ट टू y करो तो यहाँ पे x कांस्टेंट रहेगा और y स्क्वायर का 2y, तो इट विल बी 2xy माइनस यहाँ पे y z स्क्वायर, सो y z स्क्वायर में z स्क्वायर कॉमन गया, आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, सो इट इज माइनस z स्क्वायर इनटू 1 और सिंपली माइनस z स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई करोगे तो x कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, और डिफरेंशिएशन ऑफ y इज 1, सो इट इज सिंपली x, सो del v by del y is 2xy minus z square plus x and del u by del x is 2x. ओके, सी अगेन मैथमेटिक्स है लेकिन आपको कुछ भी नहीं, सिर्फ सिंपल डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। ओके, आपको फॉर्मूले में नहीं जाना है cos थीटा sin थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा इज माइनस साइन, आपको उसमें नहीं जाना है। ओके, यहाँ पे आपको जो पावर वाले डिफरेंशिएशन होते हैं जैसे x टू द पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 5x टू द पावर 4। ओके, x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 4x टू द पावर 3। ओके, तो आपको सिंपल डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। So simply putting the value of del u by del x and del v by del y in continuity equation. Okay, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो del u by del x का वैल्यू क्या है 2x, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, प्लस del v by del y क्या है 2xy minus z square plus x, so 2xy minus z square plus x that equals to plus del w by del z equals to 0. अभी हम क्या करेंगे, ये सारी टर्म राइट साइड को ट्रांसफर कर देंगे। ओके, so we will have del w by del z equals to x plus 2x is 3x, राइट साइड में आके माइनस 3x, so माइनस 3x प्लस 2xy राइट साइड में आके माइनस 2xy माइनस z स्क्वायर राइट साइड में आके प्लस z स्क्वायर। ओके, अभी हम क्या करेंगे, ये del z को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, so we will have del w equals to minus 3x minus 2xy plus z square into del z. Okay, so this is the value of del w. Okay, but हमें del w नहीं w पता करना है। Okay, so for finding out the w we will integrate the equation to both side. Okay, so integrating both side, so here it will be integration of del w that equals to integration of minus 3x plus 2xy plus z square into dz. Okay, so integrating both side, अभी इंटीग्रेशन ऑफ del w क्या होगा w. ओके, देन यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू z, और यहाँ पे z का कंपोनेंट नहीं है, सो 3x बाहर चले जाएगा, इट विल बी सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ dz। ओके, 1 मिनट। ओके, ये ब्रैकेट के साथ ओपन करो, सो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 3x dz। ओके, अभी यहाँ पे z का कोई कंपोनेंट ही नहीं है, सो माइनस 3x बाहर चले जाएगा, सो इट विल बी माइनस 3x इंटीग्रेशन ऑफ dz, सो इंटीग्रेशन ऑफ dz इज नथिंग बट z, सो ये इंटीग्रेशन होगा माइनस 3xz। ओके, सो ऑन इंटीग्रेशन it will be minus of 3xz. सिमिलरली यहाँ पे सेकेंड टर्म में माइनस 2xy बाहर चले जाएगा, सो यहाँ पे सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ dz रहेगा, सो इट विल बी z, so minus 2xyz. ओके, अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ z स्क्वायर dz रहेगा, so z स्क्वायर dz का इंटीग्रेशन क्या होता है z टू द पावर 3 अपॉन 3, ओके, और z क्यूब अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
ओके, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ W। ओके, तो आपको U और V पता था, आपने W कैलकुलेट कर लिया। सेम मेथड से आपको सेकंड केस सॉल्व करना है। सेकंड केस में V और W दिया है, आपको U निकालना है। ओके, हियर दिस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बेसिकली यहाँ पे इंटीग्रेशन विद Z है, सो इट विल बी फंक्शन ऑफ X एंड Y। ओके, एंड केस 2 में V क्या था हमारा, y स्क्वायर था, 2y स्क्वायर था, देयरफॉर del V by del y। ओके, तो del V by del y करोगे तो 2 बाहर चले जाएगा, so it will be differentiation of y square 2y होता है, so 2y into 2, so it is 4y। okay, similarly w is 2xyz, अब इसको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z करना है, तो 2xy बाहर चले जाएगा, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ z is 1, so it is 2xy into 1 or simply 2xy। so putting the value in continuity equation, so del u by del x that equals to 4y plus 2xy। अब इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे, we will have del u by del x equals to minus 4y minus 2xy, del x को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और यहाँ पे एक्चुअली सिर्फ एक ही डिफरेंशिएशन है, सो del will be replaced by d। ओके, जब एक ही डिफरेंशिएशन होता है, ओके, तो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन को कंप्लीट डिफरेंशिएशन से रिप्लेस कर सकते हो। therefore you will have du equals to minus 4y minus 2xy dx। ओके, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, so on integrating left side integration क्या हो जाएगा, integration of du will be u, right side will be integration of minus 4y into dx। okay, so minus 4y constant हो जाएगा, और integration of dx will be x, so it is minus 4xy। okay, similarly यहाँ पे minus 2xy, तो यहाँ पे minus 2y तो constant हो गया, minus 2y constant हो गया, integration of x क्या हो जाएगा, x square by 2 plus constant, so constant यहाँ पे इंटीग्रेशन x का हुआ था, तो constant will be a function of y and z। okay, so it will finally it will be minus 4xy, यहाँ पे 2 cancel होगा, so it is minus x square y plus function of y and z, और यहाँ पे plus c लिखा तो भी चलेगा।